Now welcome to the third episode. आज हम लोग स्किन पे स्कल्पचर करेंगे एंड इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट देन अदर लुक्स. यहाँ पे हम काफ़ी सारा ब्रोंजर इस्तेमाल करेंगे बिकॉज डे समर लुक है, थोड़ा सा सन किस तो होना ही चाहिए और उसके साथ ब्लश भी, मोस्टली पाउडर प्रोडक्ट्स. सो लेट्स गो हिट इट. नाउ द स्किन इज फ्लैट. हमेशा याद रखिए जब अच्छी तरीके से पूरा फाउंडेशन हो गया है सो डेफिनेटली हो सकता है फेस थोड़ा सा बड़ा लगे, आंखें थोड़ी सी छोटी लगे. दैट इज़ नॉर्मल बिकॉज नाउ यू कांट सी द शैडोज, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द करेक्ट शैडोज एंड द कॉन्टूर एंड द हाईलाइट, राइट? एंड ऑल्सो वील गिव अ स्प्लैश ऑफ कलर ऑन द फेस. समर लुक है तो डेफिनेटली वी हैव टू हैव अ लॉट ऑफ नाइस स्प्लैश, पिंक स्प्लैश ऑन द फेस विच इज गोइंग टू बी द ब्लश. सो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टूर. आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी क्रीम हाईलाइट. मैंने ऑलरेडी अंडर आइज ब्राइटन कर दिए हैं थोड़े से फाउंडेशन से. यहाँ पे हम सिर्फ पाउडर का इस्तेमाल करेंगे फॉर द डे लुक एंड फॉर द समर फील. वी आर गोइंग टू यूज कॉन्टूर. कॉन्टूर के लिए आई विल फर्स्ट यूज अ लाइट पाउडर कलर. आई एम यूजिंग दिस पैलेट फ्रॉम द किट. हमारे किट में ये पैलेट है, बहुत ही खूबसूरत पैलेट है. इसमें आपके सारे प्रोडक्ट्स हैं. हाइलाइटर भी हम इसी में से यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टूर, ब्लश, सब कुछ इसी में है. सो आई एम गोइंग टू यूज़ अ कॉन्टूर एंड क्योंकि शिल्पा इज़ क्वाइट लाइट आई एम गोइंग टू यूज़ अ लाइट कॉन्टूर फर्स्ट. एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रोन्ज्ड इफेक्ट थोड़ा सा दूंगी, थोड़ा सा अ लिटिल more blended than regular sharp contour on the brides. So we'll start it. Just turn your face a little bit, Shilpa. So आप देख सकते हैं I'm starting it from the earlobe, but I'm making it a little, I'm using a big brush like a bronzing brush and I'm making it a little flushed on the skin because I want to make her whole cheek look a little thinner and also a little more bronzer look rather than just sharp contouring. Same thing this side. Just blush it, flush it like a bronzer. No need to give a very sharp contour. हम लोग बाद में इसमें थोड़ा और ब्रोंजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. यू विल सी हर फेस विल लुक अ लॉट मोर थिनर एंड शी लुक वेरी अट्रैक्टिव एंड शी ऑलरेडी इज वेरी अट्रैक्टिव. Shilpa, are you feeling sleepy? No. That's very important. She should feel sleepy. Actually, the pressure of the brush matters. अगर आपका प्रेशर ब्रश का ठीक है तो आपकी कॉन्टूर और हाईलाइट जो कुछ भी है, it will look more like just tickling and your model will feel very comfortable. That is a good thing. So अब हमने बहुत लाइट कॉन्टूर दिया है and it's like a flush contour to just give her a little sharp sun-kissed kind of look, and I will increase the contour or the bronzer later. First I will do the blush and I'm using a powder blush from the same palette. थोड़ा सा लेके and I'm using a dome shape brush और हल्के से हम फ्रंट चीक से लेके लोब्स तक इसको फ्लश करेंगे. Because in this look the cheeks can be quite flushed and it should give a nice sun tan, sun kiss look, and if it is a little extra also it won't look good. It just should not go patchy. इसके लिए हम लोग बहुत कम प्रोडक्ट लेंगे, उसको डस्ट ऑफ करके फिर यूज़ करेंगे and we'll use it from the apples of the cheeks to down and we'll keep on moving up onto the earlobe like this so that it gives you this height. Very important. So just check it's same on both sides, bit more color on this side, and yes, it should look like she's been in the summer heat but still controlled. I'm also going to put a little bit of blush on her nose. It will look very cute. Just whatever is remaining, brush it a little bit over the forehead, over the chin. That's it. It should not look like color, but it kind of gives a little bit of flush on the face, which looks amazing. Yes, and the contours are all coming up slowly. Now we'll use a bronzer you will see the T-zone will come up even more beautifully. So अब मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रोंज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ. ब्रोंज़र और कॉन्टूर जो मैंने यूज़ किया उसमें यही डिफरेंस है कि कॉन्टूर काफ़ी मैट होता है और जो ब्रोंज़र मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें थोड़ा सा शीन है प्रोडक्ट में. इट्स अ वेरी सॉफ्ट ब्रोंज़र. कोई भी पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं बट वो थोड़ा सा उसमें आप देखेंगे थोड़ा सा शाइन होगा और मैं उसको पूरा साइड ऑफ द फेस यूज़ करूँगी बिकॉज ब्रोंज़र इज़ समथिंग एंड इवन ऑन द हाइट ऑफ द चीक बोन्स लिटिल बिट. उसके बाद हम शाइन ऐड करेंगे. So इससे क्या होगा, the face will look a little sun-kissed and this is amazing for summers. Looks amazing even if you're going on a beach party, even if you're going on a beach wedding or you're going for a pool party. This looks amazing. A complete whiteout face doesn't look good in summers. So I'm using a body brush. You can see it's a big brush and bronzer looks amazing. We'll fix her hair later.
So sorry, Shilpa, I'm spoiling everything. But yes, when you're doing this kind of thing, you have to make sure that it runs into the hairline very naturally, right? So this will give a nice sun-kissed kind of a feel on the face, and she'll look really, really sculpted on the face and also on the jawline. I'm not really contouring her nose. She has a very small and cute nose. Doesn't need contouring, but I'll just sharpen her nose from this side later. So you can see now the T-zone is quite bright and her face has got a very beautiful sculpture, right, Shilpa? You will see the mirror, of course, and you will like it. So मैंने आपको बोला nose के लिए we don't need to really contour her nose. She has a very apt, small, sharp nose, but her eyes are a little fast that you can see. There's a little gap, this area. So all I'm doing is I'm taking very little product, and I'm just sharpening this area. That's it. So if you see this, and I'm blending it, and मैं पाउडर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ. मैं आपको फिर से दिखाती हूँ वही लाइट प्रोडक्ट जो हमने सबसे पहले यूज़ किया था, मैट, उसको हम यहाँ से लेंगे, ब्राउज से शुरू करेंगे और हम इसकी इनकी जो नोज़ ब्रिज है, नोज़ लाइन है, वहाँ पे थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर देंगे. दैट्स ऑल. मेक श्योर दैट इट्स ब्लेंडेड, इट्स नॉट टू मच, एंड दिस विल गिव अ लिटिल शार्पनेस टू हर नोज़ एंड द होल स्ट्रक्चर. इट विल लुक रियली नाइस. मेक श्योर ये लाइन की तरह ना रुक जाए यहाँ पे, तो उसको आप ब्लेंड भी कर देंगे. That's all you need to do, and may just blend it off. That's it. A little bit of structure, जैसे हम face chart में आपको सिखाते हैं कोर्स में, उसी तरीके से. So of course if you are not in the course, come and see how we do it. So this is what it is, and you will see a little sharpness in her nose bridge already. So this is enough for this nose. You have to always decide कि contour क्या करना है face पे. एक ही तरीके से हर face को contour नहीं कर सकते हैं, because it depends on the shape, the bone structure, everything. Right now she's perfectly tanned for the summer look. Now we will do a little bit of highlighting for her face, and you will see we are going to use powder highlighter only for this look. मैं इसी पैलेट से, आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें हमने इसी पैलेट से कर ली. ये हमारे किट का पैलेट है, एंड दैट इज़ वाई आवर स्टूडेंट्स कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद दिस पैलेट. मैं यहाँ पे इस हाइलाइटर का इस्तेमाल कर रही हूँ. इट्स अ पाउडर हाइलाइटर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्मूथ, एंड इसको मैं यूज़ करूँगी. जस्ट टर्न योर फेस, शिल्पा. दिस इज़ द पाइवट पॉइंट. यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा, इफ यू कैन सी आई एम यूजिंग अ वेरी स्मॉल ब्रश, राइट. बहुत बड़ा ब्रश हाइलाइटर के लिए नहीं लेते हैं. इसको आप कोशिश करेंगे कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करें और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक बार में ना लें, बिकॉज वी डोंट वांट टू मेक हर लुक लाइक अ शाइनी डिस्को बॉल. और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि बहुत स्मूथ हाइलाइटर का इस्तेमाल करेंगे. वाई? बिकॉज इट इज़ अ डे लुक. सो समर्स में सन की रोशनी की वजह से जो है वो शाइन काफ़ी ज़्यादा दिखना भी अच्छा नहीं लगता है. इट लुक्स आर्टिफिशियल. आई एम यूजिंग दिस बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्मूथ हाइलाइटर. बहुत ज़्यादा चंकी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइलाइटर का इस्तेमाल ना करें प्लीज़. अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा चंकी है और उसमें पार्टिकल्स हैं बहुत जो ग्लिटर की तरह चमक रहे हैं, डोंट यूज़ इट ऑन द स्किन. एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग अ लॉट ऑफ हाइलाइटर. मेरे हिसाब से ये समर लुक के हिसाब से काफ़ी सारा मैं यूज़ इसलिए भी कर रही हूँ फ्रीली, क्योंकि हमारी मॉडल का स्किन काफ़ी टेक्सचर फ्री है. इट्स वेरी स्मूथ इफ़ यू कैन सी. सो दिस विल लुक रियली नाइस ऑन हर. प्लीज़ डोंट यूज़ टू मच ऑफ शाइन इफ़ यू सी कि आपके मॉडल का जो स्किन है उसमें ज़रा सा टेक्स्चर है. डोंट डू दैट. तो आप अवॉइड कर सकते हैं उसको. सिर्फ मैट शाइन में ही जो हमने किया वो छोड़ सकते हैं आप. ज़रा सा नोज़ ब्रिज पे मैंने इस्तेमाल किया, ज़रा सा टिप पे इस्तेमाल किया. डोंट यूज़ ऑन द होल नोज़. इट डजंट लुक गुड, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग अ डे लुक. लिटिल बिट ऑन हर चिन, little bit, just to add that, and a little bit on the nose bridge. Automatically it will shine. If you want, you can do a little bit on brow bone so that वो थोड़ा सा sharpness देता है. Otherwise it's not a necessity. Otherwise it looks nice. So when she's turning her face, you will see that beautiful shine. Otherwise it looks natural and glowy. So this is, we are done with her contour, her highlight and her blush, and her skin is beautifully flushed and bronzed. अगर आपको और चाहिए तो बाद में पूरा आई लुक करने के बाद आप टच अप कर सकते हैं. See you again. Now the model's face is all sun-kissed and prepared. So let it settle down for some time, and then we'll start with the most beautiful part, which is eyes. Next episode पे चलिए सीखेंगे eyes कैसे करेंगे इस summer look के लिए.